Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 28th of March. Students, here we will be talking about India's leap in electronic manufacturing and export. We will be talking about India's energy intensity that has improved. Next thing, we will be talking about gold monetization scheme that has been recently discontinued by the government of India. There are many more news in this video, students, that we will be discussing, which will be helpful for your competitive exams. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Students, do watch this video. This is very important video for all the competitive exams, right? And it will give you insight about what is happening all around the world on daily basis. So it will keep you up to date. Right, it's just like reading a newspaper but with all the important news. Then students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Let's start with national affairs, students. Make in India's leap in electronic manufacturing and export. See, our India is focusing on Make in India, Atmanirbhar Bharat. Why we are doing so is that we can reduce the dependence on the imports from various other countries, and we can develop those products in-house, that means in our own country, so that we can not just consume them, as well as the surplus products can be exported to different parts of the world that will bring more dollars to India. Right, and here we have seen a leap in the electronics manufacturing. We know that in nowadays we are seeing that the chips, the electronic chips, right, the microprocessors, these are the game changers, right? And all the electronic devices, be it your smartphone, be it your smartwatch, right, be it your TV, fridge, even the cars, they are having all these microprocessors, these chipsets, right, these semiconductors. So they are very crucial, right, in coming year, and you will be seeing more and more chips will be required in various sectors. So our country is having a, we can say, a growth, a very good growth in the electronics manufacturing. If you remember, Gujarat is considered as the semiconductor manufacturing hub also. Right, here we see, as a result, India's electronic exports are expanding swiftly, with country's electronic production projected to reach $300 billion by 2026. Also remember, our country India, it has made significant strength in the mobile and electronics manufacturing, and we have become the world's second largest mobile manufacturing country in the world. Second largest mobile manufacturing country in the world. Right, take a note of this. Also remember one more thing, that only 26% of the mobile phones sold in India were locally made by 14-15, but now it has increased to almost 99.2% of the products, mobile phones that are sold in India, are manufactured in India itself. Right. Apart from this, in 2023, Government of India has also approved the first major project with USA-based chip maker company Micron Technology Incorporation for approximately 22,000 crore rupees. Also in Feb 24, a proposal for Mumbai, Maharashtra-based wholly owned subsidiary of Tata Sons, that is Tata Electronics Private Limited, for setting up a manufacturing fab facility in Dholera, Gujarat, with an estimated cost of 91,526 crore rupees. Right, so more focus is on manufacturing.
right? There was also a scheme, that is PLI scheme, production linked incentive scheme. It was launched on 1st of April 2020, the aim of which was to enhance the domestic manufacturing and also attract the investment in mobile phones value chain, including electronic components and semiconductor packaging, right? This scheme, it offers an incentive of up to 3 to 6% on incremental sales of goods manufactured in India. Moving on, one more program was there, students, that is your Semicon India program, right? It was launched in 2021 and it was launched with a budget of 76,000 crore rupees. It was to promote the development and manufacturing of semiconductors locally by local players. Moving on, next is Ministry of Statistics and Program Implementation. They have released a report that is talking about the India's energy intensity, which has improved to 0.2180 megajoules per INR GDP in FY24, right? So we are seeing that the amount of electricity that is being generated here, it is increasing, right? So we have seen the energy intensity improve to 0.218 megajoules in FY24, right? And India continues to rely significantly on the imports for their energy needs, right, which accounts for crude oil, which accounts for almost 89%, then natural gas 46% import, coal 26% import, right? And still that we are seeing that is the one of the main reason is that we have to import these energy resources from outside. So why don't we establish renewable sources of energy, say for example solar plants, right? Then if you remember, Prime Minister Har Ghar Muft Bijli Yojana was launched to install the solar panels at their rooftops. What was the reason? So that we can generate electricity in-house and we do not have to be dependent on the such resources from other countries, right? Apart from this, we are seeing a significant growth here in the renewable energy, as we saw, right? Here electricity generation rose to 12.1% from 6% in FY15, and here the renewable energy potential reached 21,09,655 megawatt by 31st of March. Wind energy this much, solar this much, and light hydro this much. Moving on, students, next is government has discontinued the MLTGD under gold monetization scheme. What is this MLTGD? It is your medium term and long term government deposit scheme, right? It was basically your sovereign gold bond scheme that was discontinued by the central government in 2025. What was this sovereign gold bond scheme? Where you will be buying gold, right? You won't be getting a physical possession of that gold, but you will be getting a certificate by government of India stating that you have bought so amount of gold from the government, and on the gold that you purchase you will be getting 2 to 2.5% interest rate annually, and there will be a term for which you have to hold those bonds, that is minimum of 5 years, and it can go up to 7 or 8 years, right? This is the lock-in period here, correct? So recently government, they have eliminated or they have discontinued this medium and long term government deposit bond, correct? Take a note of this. So the investors will not be able to take benefit of this amount. And one more thing, the amount that you used to get after 5 years or after 5 years when you withdraw that amount, right, every year you will be getting this 2.2.4 to 2.5% interest, right? This will be taxable, but the final amount that you will be getting, whatever the rate of the gold will be there at the time, that will be completely tax free. Next is Ministry of Rural Development and UNICEF UVA. They have signed a statement of intent to empower the rural women and youth. I repeat, recently Ministry of Rural Development, they have partnered with UNICEF's UVA. This is your Generation Eliminated India program or UNICEF's UVA initiative. They have signed a 3-year agreement here, and this will be a statement of intent. This will enhance the livelihood opportunities for the rural women and the youth in India. Here you will be skilling will be done of these rural women and youths. Entrepreneurship will be promoted. Job opportunities will be provided to them. Also, this partnership aims to boost the female labor force participation and empower 10 self-help group members, particularly focusing on the youth. Correct? Moving on, students. Next is IIM Mumbai and Comptroller Auditor General of India. They have signed a memorandum of understanding that will strengthen the economic governance and
accountability, right? What this will do is this will improve efficiency and transparency of public sector logistics, supply chain and inventory management. Next is Ministry of Defense. They have signed a contract for procurement of HMV. What are HMVs? These are high mobility vehicles, 6x6 gun towing vehicles for the Indian Army, right? So these are the guns which have gun mounted at the back of those vehicles. So it is your high mobility vehicle, 6x6 gun towing vehicles. They will be procured for the Indian Army and Ministry of Defense. They have signed the contract here with whom? Tata Advanced Systems Limited. So take a note of this. Moving on, next is international affairs students. United Nations Armed Food and Agriculture Organization, they have recently released a report at the CGRFA 20 where that the global crop diversity under the threat as 9 crops dominate production. I repeat, according to the report released by UNFAO, it stated that there are concerns about the declining diversity of the plant genetic resources. This report was released during the 20th meeting on the Commission on Genetic Resources of Food and Agriculture that was released in Rome, and this report was prepared using the data from 128 countries and several research institutions. The report stated that despite the cultivation of around 6,000 plant species, the report revealed that 60% of the global crop production depends on just 9 crops. Which are those 9 crops? Sugarcane, maize, rice, wheat, potatoes, soybean, oil palm fruits, sugar beet and cassava. The report also highlighted that the traditional farmer varieties and land acres are under increasing threat. Where is the headquarters of this UNFAO? It is in Rome, Italy. Next is banking and finance students. RBI, they have revised the PSL norms to boost credit access and will be effective from 1st of April 2025. PSL is your priority sector lending norms, right? What are these? Let's see. It will enhance the several loan limits, including housing loans for the enhanced PSL coverage. Then there will be a broadening of the purpose based on which loans may be classified under the renewable energy sector. So under the renewable energy sector, a different segment of loans will be provided. Also, the revision of the overall priority sector lending target for urban cooperative banks to 60% of the adjusted net bank credit or credit equivalent of balance sheet exposures, whichever is higher. Right? So these are some of the changes that will be coming into effect here. Next is Bank of India and NIACL. They have announced partnership to enhance the general insurance. I repeat, BOI, that is your Bank of India. They have partnered with NIACL. What is this NIACL? NIACL is your New India Assurance Company Limited, right? This is the India's largest nationalized general insurance company, and they together will have announced a partnership that will enhance the general insurance products to the customers of Bank of India. So it is a kind of a bancassurance partnership. If we talk about Bank of India, who is the managing director and chief executive officer here? Rajneesh Karnatak, headquartered in Mumbai, Maharashtra, founded in 1906. Moving on, next is Bandhan Bank. They have signed a memorandum of understanding with Indian Air Force for Shaurya salary account. That means the salary of the Indian Force personals will be credited into the Bandhan Bank, for which they have recently signed a memorandum of understanding. They will also be providing with a facility of zero balance corporate salary account, right? That has been tailored for IAF, Indian Air Force personals, veterans and their family persons. Right? Take a note of this, students. Next is IRFC. They have signed a 5,000 crore rupees loan agreement with NTPC Renewable Energy, right? This is a 5,000 crore rupees loan agreement. It is with National Thermal Power Corporation Renewable Energy, right? And it is with IRFC, right? Take a note of this. Question can definitely be asked here. Correct? Next is Union Minister Piyush Goyal has been conferred with the National IP Award 2024. This is your IP is your intellectual property award, right? He was awarded here during a function that was held where? At Bharat Mandapam in New Delhi. This award was conferred annually to recognize and reward the individuals, institutions, organizations and enterprises for their contribution to IP creation and commercialization. Right? Take a note of this. And now if we talk about IPs, our country India stands at 6th position globally for trademark filings. Right? Recently, Global Innovation Index was released and our country ranked 39th in this Global Innovation Index, right? And in trademark filing, our country is on the 6th position.
Next is appointments and resignation. Students, Indian origin Jay Bhattacharya has been appointed as the 18th director of NIH, that is National Institute of Health, by US Senate. I repeat, Dr. Jay Bhattacharya, an Indian origin professor at Stanford School of Medicine, was confirmed as the 18th director of the National Institute of Health. Next, Sanjay Kumar Mishra, he has been appointed as the full-time EAC PM member. What is this? Economic Advisory Council to the Prime Minister. Correct? And he has been appointed after former chairman Vivek Debroy. He is a 1984 batch IERS officer from UP cadre. Next is science and technology. Students, DRDO and Indian Navy, they have successfully flight tested the indigenously developed vertical launch short range surface to air missile. I repeat, DRDO and Indian Navy, they together tested this vertical launched short range surface to air missile. It was tested from integrated test range in Chandipur of the coast of Odisha. Correct, take a note of this. It was launched from a land based vertical launcher against a high speed aerial target at a very close range and low altitude, showing their near boundary low altitude capability. Next, moving on, students. Next is GE Aerospace. They have delivered the first F404 IN-20 engine to Hindustan Aeronautics Limited for Tejas LCA Mark 1A fighter jet. Right, I repeat, USA based GE company, GE Aerospace, that is your General Electric company. This is a leading engine manufacturer, and they have announced the delivery of the first of the 99 F404 IN-20 engine to the Bengaluru, Karnataka based Hindustan Aeronautics Limited, which will be used in the Tejas fighter jet. Next, students, is Indian Navy. They have launched the 10th ammunition cum torpedo cum missile barge, that is LSAM 24 yard 134, and it was launched in Maharashtra. As you can see it in the picture here, this is your LSAM 24. Correct, it was launched at MS Suryadipta Projects Private Limited, that is in Thane, Maharashtra. And this launch ceremony was attended by, here you can see, Rahul Jagat, the SPS, that is your submarine overseeing team of Mumbai, Maharashtra, as the chief guest. Next, students, remember, these barges, they have been indigenously designed and built by shipyard in collaboration with Indian ship design firm and IRS, that is Indian Register of Shipping. Here the model testing was conducted at the Naval Science and Technology Laboratory of Visakhapatnam, Andhra Pradesh, to ensure the seaworthiness. Also, these barges proudly represent Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives. Next, moving on to sports, students, AFA, that is Argentine Football Association, they have partnered with HSBC for 2025 season in India and Singapore. I repeat, Argentine Football Association and London UK based HSBC Holding PLC, they have announced a one-year partnership that will be promoting football related activities both in India and Singapore. Next, moving on to important days. World Theatre Day observed on 27th of March to honor the theatre culture significance and their role in fostering global unity. This year it was the 63rd edition of the World Theatre Day that was observed. Correct? And first time this day was observed in 1962. Next is your Punjab's Finance Minister Harpal Singh Chima has presented the budget worth 2.36 lakh crore rupees. Right? And it is for the Punjab state, correct? And here the focus will be on Yudh Nashe De Virudh, that is fight or war against the drug. Multiple anti-drug campaigns has been launched, right? And here the focus will be that how can we reduce the usage of drugs in the youth. Correct? The main focus here will be this. Who is the Chief Minister of Punjab? As you can see him in the picture here, Bhagwant Singh Mann. Governor Gulab Chand Kataria ji. So students, one more and the last news for the day is Yaosheng festival. It is celebrated in Manipur after a year. So Yaosheng festival, that is the festival of Holi, celebrated where? It is celebrated in Manipur. This is a 5-day long festival and it starts on the full moon day. That's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be better for your learning. Let's revise some one-liner, students. National Affairs, Kishan Reddy to inaugurate 175th Foundation Day celebration of Geological Survey of India at Kolkata. Then JP Nadda inaugurated the 9th National Health Mission Summit in Puri, Odisha. Government has allowed Aadhaar face authentication in private applications to ease the service access.
Then Employees Provident Fund Organization has retained the interest rate on the Provident Fund deposits at 8.25%. Then Jahan Khusrau Festival marked 75 years. Can you tell me the location where this is held? This is your homework. Next, Army Chief General Upendra Trivedi honored the World War I Indian soldiers at Neuilly Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched Women Entrepreneurship Platform first in Northeast. Next, Maharashtra government celebrated with Meta to launch the WhatsApp-based citizen services. And Amit Shah inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, Cabinet has approved the development of ropeway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Then Cabinet has approved livestock disease control program worth 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved the Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then government has launched a model that is women-friendly Gram Panchayats nationwide. Cheetah reintroduction plan to be expanded to Gujarat. And Tata Motors begins India's first hydrogen truck trials for net zero goals. Then Sahitya Academy has organized Festival of Letters 2025 at Rabindra Bhavan in New Delhi from 7 to 12th of March. Bhupendra Yadav has inaugurated World Sustainable Development Summit 2025. Next is banking and financials. SIDBI, they have signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI has imposed a penalty on HSBC, IIFL, Samasta Finance for violating norms, and SEBI has introduced a bond central to boost transparency in India's corporate bond market. Then India retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP in the third quarter of FY25. TCS extended the partnership with Norway's DNB Bank for 5 years. India's core sectors grew by 4.6% in January. GST collection jumps by 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. World Bank, if we are talking about it, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat for the next 22 years by 2047. Then UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion, 7% value in Feb. Next is appointments and resignation. SBI Life appointed Dora Babu the Parthi as the Deputy CEO. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth sets additional charge for Revenue Department. Then Levi's ropes in Diljit Dosanjh as their global ambassador. Then Christian Stalker became Australian Chancellor as a three-party government's sworn in. Then Dr. Mayank Sharma takes charge as the Controller General of the Defence Accounts. RBL Bank has appointed Agarwal as the President of the Branch Banking and T.S. Pari as their Chief Operating Officer. Then MRF brand appointed Shubman Gill as their Brand Ambassador, and RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as their Executive Director. Let's revise some one-liner, students. National Affairs. Kishan Reddy to inaugurate 175th Foundation Day celebration of Geological Survey of India at Kolkata. Then JP Nadda inaugurated the 9th National Health Mission Summit in Puri, Odisha. Government has allowed Aadhaar face authentication in private applications to ease the service access. Then Employees Provident Fund Organization has retained the interest rate on the Provident Fund deposits at 8.25%. Then Jahan Khusrau Festival marked 75 years. Can you tell me the location where this is held? This is your homework. Next, Army Chief General Upendra Trivedi honored the World War I Indian soldiers at Neuilly Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched Women Entrepreneurship Platform first in Northeast. Next, Maharashtra government celebrated with Meta to launch the WhatsApp-based citizen services. And Amit Shah inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, Cabinet has approved the development of ropeway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Then Cabinet has approved livestock disease control program worth 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved the Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then government has launched a model that is women-friendly Gram Panchayats nationwide. Cheetah reintroduction plan to be expanded to Gujarat. And Tata Motors begins India's first hydrogen truck trials for net zero goals. Then Sahitya Academy has organized Festival of Letters 2025 at Rabindra Bhavan in New Delhi from 7 to 12th of March. Bhupendra Yadav has inaugurated World Sustainable Development Summit 2025. Next is banking and financials. SIDBI, they have signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI has imposed a penalty on HSBC, IIFL,
Samasta Finance for violating norms, and SEBI has introduced a bond central to boost transparency in India's corporate bond market. Then India retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP in the third quarter of FY25. TCS extended the partnership with Norway's DNB Bank for 5 years. India's core sectors grew by 4.6% in January. GST collection jumps by 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. World Bank, if we are talking about it, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat for the next 22 years by 2047. Then UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion, 7% value in Feb. Next is appointments and resignation. SBI Life appointed Dora Babu the Parthi as the Deputy CEO. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth sets additional charge for Revenue Department. Then Levi's ropes in Diljit Dosanjh as their global ambassador. Then Christian Stalker became Australian Chancellor as a three-party government's sworn in. Then Dr. Mayank Sharma takes charge as the Controller General of the Defence Accounts. RBL Bank has appointed Agarwal as the President of the Branch Banking and TS Pari as their Chief Operating Officer. Then MRF brand appointed Shubman Gill as their Brand Ambassador, and RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as their Executive Director. Next is our homework section, student. First, PM Modi recently released the which installment of PM Kisan scheme and where did he launched it? Second question, where was or which state will be hosting the Miss World pageant and when it will be hosted? It will be hosted in India. You have to tell me the state. Then third question is, tell me recently which edition of Khajuraho Dance Festival was held and the location where was this held. Fourth question, Udan Yatri Cafe. Udan Yatri Cafe was recently inaugurated by whom and at which airport it was inaugurated. Fifth question, Majorana 1. This is the new quantum chip developed by which company, and tell me the name of the company or chip developed by Google, the quantum chip also. Tell me that also. Then one more question, sixth question, a hotline was launched for enhancing the communication between India and which country. So these are your 6 homework questions, students, and I want to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 28 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बढ़ावत देखने को मिली है इंडिया में, एंड एक्सपोर्ट्स भी ग्रो होते हुए दिखे हैं। देन हम बात करेंगे इंडिया की जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो भी इंप्रूव होती हुई दिखी है। नेक्स्ट थिंग बात करेंगे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स, उसका जो मीडियम लॉन्ग टर्म होता था गोल्ड डिपॉजिट्स, उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड इसके अलावा मैनी मोर न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। पंजाब ने अपना बजट प्रेजेंट किया, उसको डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा। इन वीडियोस को जो हम सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं, डेली करंट अफेयर्स, इनको ज़रूर देखा करो स्टूडेंट्स। जस्ट जैसे आप एग्जाम से या फिर आप डेली बेसिस पे पेपर पढ़ते हैं, राइट, ये सिमिलर उसी तरीके से मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियो लाता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में, जहाँ पे इंपॉर्टेंस एंड टू द पॉइंट चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएंगे। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in.
Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। हम बात करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की और आत्मनिर्भर भारत। इन दोनों का मेन एम क्या है कि हमें एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हम जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, हमें उन पे डिपेंडेंस खत्म करनी है एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करके उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें मार्केट में, राइट। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमें काफ़ी लीप देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हम चिप्स बनाते हैं, जो हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। आज के टाइम पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आप ये माइक्रो प्रोसेसर, ये चिप्स, ये सेमीकंडक्टर चिप्स को देखते हैं, राइट। और इसलिए अगर आपको याद हो, हम गुजरात को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जानते हैं। इवन इसके कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था पहला मेजर प्रोजेक्ट विद यूएसए बेस्ड चिप मेकर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन 22,000 करोड़ की लागत से। दूसरा आ जाता है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड होली ऑन सब्सिडरी है टाटा सन्स की, जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने सेटअप किया सेमीकंडक्टर फैब फैसिलिटी कहाँ पे, डोलेरा गुजरात में, जिसकी कॉस्ट रहेगी कि 91,526 करोड़ रुपए, जो कि गवर्नमेंट की अप्रूवल से स्टैब्लिश किया गया था, राइट। चलिए, इसी के अलावा स्टूडेंट्स एक स्कीम थी पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या थी, 3 से 6% तक का अगर आप इनको इंसेंटिव्स मिलेगा कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को, अगर वो डिजायर्ड गोल को, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसको अचीव कर लेते हैं। ये 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना एंड ग्लोबल जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, राइट, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रमोट करना इन मोबाइल फोन्स वैल्यू चेन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। इंडिया की एनर्जी इंटेंसिटी इंप्रूव होती हुई दिखी टू 0.2180 मेगा जूल्स पर INR ऑफ GDP इन 2024 इन FY24। मतलब यहीं पे हम देखें तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि इंडिया काफ़ी इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, राइट, आपके कोल को, पेट्रोल को, तो हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से। तो इस डिपेंडेंस को रोका जाए, राइट, एंड हम इंडिया में ही क्यों ना एक सोलर या फिर इंडिया में ही सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी, इनके ऊपर फोकस करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे सोलर एनर्जी में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड एक स्कीम भी लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंडर हर रेजिडेंशियल एरिया में घर को छत पर वो अपने सोलर पैनल से लगा सकते हैं, जिससे उनको सब्सिडी भी मिलेगी इस्टेब्लिश करने में एंड वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, राइट। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जो सरकार पे बर्डन होता है कि हमें हर घर में बिजली पहुंचानी है, राइट, तो सोलर पैनल लगने से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, करेक्ट, एंड उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा एंड सरकार पर भी जो प्रेशर रहता है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्या पोटेंशियल है हमारी सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, लार्ज हाइड्रो एनर्जी का। इसके बाद आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है मीडियम लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। देखो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये क्या थे, ये सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे। मान लो आपने 10 ग्राम सोना बाय किया, राइट, एंड इसकी एक्स वैल्यू है अभी, एंड ये स्कीम होती है आपको एक फिक्स रिटर्न टाइम पीरियड के लिए आप इसको होल्ड करते हैं। मिनिमम 5 साल तक आपको इसको होल्ड करना पड़ता है, मैक्सिमम इसका 8 रहता है। एंड जब आप इसको विड्रॉ करेंगे ना, वो जो गोल्ड की वैल्यू होगी 8 साल बाद से फॉर एग्जांपल, तो वो एक्स होके वाई हो जाएगी। तो ये जो वाई वैल्यू आएगी, जो भी डिफरेंस होगा ना वहाँ पे आप एक तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना, प्लस हर साल आपको 2 से 2.5% तक का यहाँ पे एनुअल रिटर्न मिलेगा आपकी जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी इस एक्स रिटर्न पे, राइट। जो भी गोल्ड की वैल्यू होती रहेगी उस पर आपको 2.5% यहाँ पे सरकार देगी कि आप इसको गोल्ड को बाय कर रखा है। गोल्ड आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, एक पेपर फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटराइज रहेगा जहाँ पे लिखा होगा आपने सरकार से इतना गोल्ड बाय किया है एंड इतना अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस स्कीम को सरकार ने अभी बंद कर दिया है, राइट, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है इससे। एंड इवन बोला जा रहा है कि अभी बर्डन आने के चांसेस भी हैं क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड सरकार का डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो बोला जा रहा है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो जो हमारा गोल्ड रखता था, सोना रखता था फिजिकली, वहाँ पर घपला हो सकता है, वहाँ पर वो हमें सोना नहीं मिल सकता है। एंड बोला जा रहा है ऑलमोस्ट 40 से 50% तक का हमें नुकसान देखने को मिल सकता है हमारी गोल्ड की वैल्यू में। बट वो हम इधर उधर से रिकवर कर लेंगे, यूके से ही किसी और तरीके से, उनका कुछ और इनिशिएटिव या प्रोजेक्ट्स में उसको चलान करके या फिर उन पर फाइन लगाकर। बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, ये न्यूज़ है मार्केट में, बट लेट्स सी क्या होता है, करेक्ट। तो ये थी आपकी सोलर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ युवा, इन्होंने साइन किया एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू एम्पावर द रूरल वीमेन एंड यूथ। तो स्टूडेंट जहाँ यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा ना वो रहेगा स्किलिंग के ऊपर कि कैसे हम यहाँ पे वीमेंस को यूथ को स्किल कर सकें, उनको स्किल्स प्रोवाइड करा सकें, राइट। एंड यहीं पे अगर हम देखें ये जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं ना इसके अंडर कंप्यूटर दीदी सेंटर्स खोले जाएंगे, दीदी की दुकान इनिशिएटिव्स लॉन्च की जाएंगी, यूथ हब सेटअप किया जाएगा जो कि एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे यूथ को जॉब्स के साथ स्किलिंग प्रोग्राम्स वॉलंटियर्स अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट किया जाएगा एंड लखपति दीदीज़ के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ युवा ने साइन किया MOU ताकि रूरल वीमेन एंड यूथ को यहाँ पे एम्पावर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर IIM मुंबई एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि हम हाई मोबिलिटी व्हीकल 6x6 गन टॉविंग व्हीकल्स को प्रोक्योर कर सकें इंडियन आर्मी के लिए। ये बेसिकली वो व्हीकल्स होती हैं जिनके पीछे आप देखेंगे बड़ी बड़ी गन्स माउंटेड होती हैं, राइट। इससे इंडियन आर्मी की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ ये साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अफेयर्स पे। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो बताती है कि जो ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी है ये अंडर थ्रेट है एज 9 क्रॉप्स डोमिनेट प्रोडक्शन। हम 6000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ ग्लोबली यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, उनको उगाते हैं, राइट। लेकिन जो मेन अगर हम देखें जो मेन परसेंटेज आ जाता है, राइट, वो अगर आप देखें तो आप देखेंगे जो 60% ऑफ द ग्लोबली जो क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है ना वो 9 क्रॉप्स में से आ जाती हैं। वो क्रॉप्स हैं शुगर केन, मेज, राइस, व्हीट, पोटैटो, सोयाबीन, ऑयल, पाम फ्रूट, शुगर बीट एंड कसावा। ये वो क्रॉप्स हैं जो 9 क्रॉप्स 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं या फिर उस पर इनको ग्रो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कहीं इतनी सारी वैरायटीज़ हैं लेकिन ग्रो हम सिर्फ ये कर रहे हैं, राइट, सिर्फ 9 वैरायटीज़। क्यों? क्योंकि यही आज के यूज़ ज़्यादा है। लेकिन इससे क्या है, जो डाइवर्सिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। जो इतने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती हुई हमें दिख सकती है, राइट। एंड ये डाटा 128 कंट्रीज एंड सेवरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर किया गया था। UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस डाटा को प्रेजेंट किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? रोम, इटली में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। RBI ने रिवाइज किया PSL नॉर्म्स को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स को, ताकि जो क्रेडिट एक्सेस है वो बढ़ सके, राइट। MSMEs को ज़्यादा फाइनेंस मिल सके, मतलब बिजनेस को यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जा सके। एंड 1 अप्रैल से यहाँ पे ये लागू होता हुआ हमें देखेगा, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहाँ पे हो सकती है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, फिर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में हम देख सकते हैं, स्पेस सेक्टर में हम देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में देख सकते हैं तो वहाँ पे फंडिंग होती हुई हमें यहाँ पे दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया एंड NIACL, इन्होंने अनाउंस की पार्टनरशिप ताकि जनरल इंश्योरेंस को एनहेंस किया जा सके। अब राइट, एक बैंक ऑफ इंडिया एंड NIACL, ये NIACL क्या है बेसिकली? ये है आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट। ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनलाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एंड ये जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है? एक बैंकरेंस पार्टनरशिप, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? वो है रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र। 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर बंधन बैंक, इन्होंने MOU साइन किया इंडियन एयरफोर्स के साथ फॉर शौर्य सैलरी अकाउंट। इससे क्या होगा कि जो भी इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स हैं, वेटरन्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं वो अपनी जो सैलरी आएगी वो कहाँ पर आएगी? बंधन बैंक में यहाँ पे अकाउंट होगी, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो यहाँ पे जीरो बैलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इनको एंड 1700 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया जिसका ये बेनिफिट मिलेगा इन्हें। नेक्स्ट आ जाते हैं IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने 5000 करोड़ रुपए का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल NTPC के साथ, राइट। एंड ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया या फिर ये अग्रीमेंट साइन किया गया 5000 करोड़ रुपए का, करेक्ट। तो ये जो NTPC REL है इन्होंने सिक्योर किया अनसिक्योर्ड लोन बैक बाय नेगेटिव लाइन विद लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस एंड यहाँ पे ग्रोथ रहेगी कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ग्रो कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को कन्फर किया गया नेशनल IP अवार्ड 2024 से। IP क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे ये लोकेशन कहाँ रहेगी? भारत मंडपम, जहाँ पे इन अवार्ड से सम्मानित किया गया था नेशनल IP अवार्ड से। रीजन बीइंग कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है IP क्रिएशन में एंड कमर्शलाइजेशन में, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था, करेक्ट।
तो एक और चीज़ याद रखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की बात करें तो हमारी कंट्री की, इंडिया की रैंक क्या रहेगी, 39, एंड इंडिया छठी पोजीशन पे आ जाता है ग्लोबली फॉर ट्रेडमार्क फाइलिंग, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। इंडियन ओरिजिन जय भट्टाचार्य, इनको अपॉइंट किया गया 18वां डायरेक्टर ऑफ NIH, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर मोनिका M बेटागोली को, ये USA का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके बाद संजय कुमार मिश्रा जी, इनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सक्सीड करेंगे विवेक देवराय जी को। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। DRDO एंड इंडियन नेवी ने भी सक्सेसफुली कंडक्ट करा एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसको टेस्ट किया गया ITR चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से, इसको यहाँ पे टेस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है GE एरोस्पेस जनरल, GE है आपका जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, या जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, ये एक USA बेस्ड कंपनी है, करेक्ट। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपके, एंड ये अभी फर्स्ट ऑफ 99 जो आपके F404 IN-20 इंजन रहेगा, जो कि तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट में यूज़ किया जाएगा, वो डिलीवर किया गया। किसको दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये डिलीवर किया गया है। आई रिपीट, हॉल को डिलीवर किया जाएगा। पहला इंजन ऑफ द 99 इंजन जो GE एरोस्पेस बना के देगा, जो कि तेजस फाइटर जेट में यूज़ किए जाएंगे। एंड कहाँ डिलीवर किए गए, राइट, ये आपका डिलीवर किया गया टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया 10th एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बाज LSAM-24, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। मुंबई महाराष्ट्र में, थाने महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, करेक्ट। एंड LSAM होता है लार्ज स्केल एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडियन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देता है। एंड इससे इस बार्ज को बेसिकली डिज़ाइन एंड बिल्ड किया गया है बाय द शिपयार्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन शिपिंग एंड डिज़ाइन फर्म एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर। एंड मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को ये बढ़ावा देता है। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स की। AFA अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन एंड लंदन UK बेस्ड HSBC होल्डिंग, इन्होंने अनाउंस किया है 1 साल की पार्टनरशिप, ताकि फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में, एज वेल एज सिंगापुर में ज़्यादा इवेंट कराए जा सके, वहाँ पे प्रमोशन की जा सके फुटबॉल स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने 63rd एडिशन ऑब्जर्व किया। ये ऑनर किया जाता है कल्चरल सिग्निफिकेंस को बढ़ावा देने के लिए एंड थिएटर का जो रोल रहा है एक ग्लोबल यूनिटी एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने प्रेजेंट किया 2.3 लाख करोड़ रुपीस का बजट। फोकस रहेगा कि कैसे हम ड्रग के यूज़ को एलिमिनेट कर सके पंजाब से, राइट। इनके द्वारा एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, युद्ध नशे दे विरुद्ध, राइट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इलीगल यूज ऑफ ड्रग है यूथ के द्वारा उसको हम ख़त्म कर सकें। एंड इसके खिलाफ यहाँ पे जंग छेड़ी गई है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, भगवंत सिंह मान जी। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के गवर्नर रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टूडेंट्स याओशेंग फेस्टिवल। ये क्या है, फेस्टिवल ऑफ होली। 5 दिन लंबा ये फेस्टिवल होता है। इसको मणिपुर में भी सेलिब्रेट किया गया, मार्क करके चलेंगे याओशेंग फेस्टिवल, करेक्ट। एंड फुल मून डे के दौरान ये स्टार्ट किया जाता है एंड 5 दिन लंबा ये फेस्टिवल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। For which year India has recently got the hosting rights for the Asian Rifle या Pistol Cup? So for which year? It is for the year 2026 and the competition is scheduled to take place in New Delhi. Next, Alistair Brownlee has announced his retirement from professional competition at the age of 36. Alistair Brownlee is a double Olympic champion in which sport? So Alistair Brownlee is a double Olympic champion in triathlon. ठीक है, एंड 36 की एज में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स, जो कि अभी लुसेल कतर में हुई। तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीती गई। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द वीमेंस एंड मेंस सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ UP? तो वो है PV सिंधु एंड लक्ष्य सेन। Next, Indian hockey team defeated Pakistan in the final to win the men's hockey junior Asia Cup held from 26th of November
to 4th of December in Muscat, Oman. This is the location. This victory marked India's which title? This was the India's 5th title. Earlier it was 2004, then 2008, then 2015, then 2023 and now 2024. Next, in which year Saudi Arabia will host the International Federation of Association of Football, that is FIFA Men's World Cup. So Saudi Arabia will be hosting this FIFA Men's World Cup in 2034. Next is who has recently become the second Indian and 16th player worldwide to reach the gold standard ELO rating of 2800 points after legendary Vishwanath Anand. So Arjun Argesi has reached this title. Next, which country has recently won the Asian Cricket Council Under-19 Men's Asia Cup title by defeating India in the finals held in Dubai, UAE? So right option is Bangladesh. This was the 11th edition of this title, remember this. Next, in December, British racer Lando Norris has won the season-ending F1 Abu Dhabi Grand Prix. Which brand does he represent? So Lando Norris, he drives for McLaren. Next, where will be the 5th edition of Khelo India Winter Games take place between January 23rd and Feb 25, organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports. So this Khelo India Winter Games is scheduled to take place in Ladakh, Jammu and Kashmir. Important students, and they will be the 5th edition of Khelo India Winter Games. Next, Indian Grandmaster D. Gukesh became the youngest world champion at the age of 18, defeating China's Ding Liren to win the World Chess Champion 2024. Question asked here is, he broke the record of which world champion? So he broke the record of Garry Kasparov's, right? He became the world champion at the age of 22 years, 6 months and 27 days. But now D. Gukesh has broken his record by 18 years, 8 months and 14 days. Next, which cricket team has recently won the 17th edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy by defeating Madhya Pradesh in Bangalore, Karnataka? So right option is Mumbai cricket team, and this was second title of Mumbai's cricket team. Next is recently Team Asia including India's Manika Batra led by Ma Long defeated Team World in the inaugural edition of the Waldner Cup. This Waldner Cup, first edition of this Waldner Cup was held recently. Where was this held? It was held in Norway, and Team Asia has won this title. Next, which Pakistani cricketer announced recently retirement from international cricket? So Mohammad Amir and Imad Wasim, they have announced retirement from international cricket. Next, which of the following are correct with respect to Ravi Chandra Ashwin's retirement from international cricket in December 2024? If we look at the options here, which of the following is right? Option A and B is right, C is wrong. It is saying that Ravi Chandra Ashwin received Padma Shri, one of the India's highest sports honor, for his exceptional contribution to cricket in 2015. Absolutely right, but not Padma Shri but Arjun Award. Next, where will be the 11th edition of International Hockey Federation Hockey Women's Junior World Cup 2025 held? So where this will be held, the 11th edition? The 11th edition will be held in Santiago, Chile. Next, which cricket team has recently won the first edition of the Asian Cricket Council Under-19 Women's T20 Asia Cup by defeating Bangladesh in Kuala Lumpur, Malaysia? This is our team, India. Next, who has recently won gold medal in the International Chess Federation, that is FIDE World Youth Under-18 Open Rapids and Blitz event that was held in Slovenia? So who recently won the gold medal here? Pranav Venkatesh won the gold medal here. नेक्स्ट आ जाते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन कितना? टू 6.3% फॉर विच फाइनेंशियल ईयर? फॉर FY25. तो मॉर्गन स्टैनली 6.3 प्रोजेक्ट कर रहा है. फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कि अंडर विच डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने ग्रांट किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप. तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू OECD इनके इकोनॉमिक आउटलुक डाटा रिलीज किया गया फॉर दिसंबर 2024. इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी FY25 के लिए कितनी रहेगी? 6.8%. OECD के द्वारा 6.8%. नेक्स्ट, 9 इंडियन स्टेट्स विद एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स फॉर वीमेन हैड अ टोटल बजट एस्टिमेटेड $18 बिलियन. मतलब 9 ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जो कि डायरेक्ट
बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी वीमेंस को बाय ट्रांसफरिंग मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट। तो ऐसे में जो टोटल बजट निकल के आया वो $18 बिलियन का यहाँ पे सामने निकल के आया फॉर सच स्कीम्स की डायरेक्ट मनी वीमेंस के अकाउंट में जाया जा सके। राइट, ये कितना परसेंट है इंडिया की जीडीपी का? तो ये 0.5% है इंडिया की जीडीपी का। ये गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल रिसर्च के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला इसके बदौलत इंडिया का जो वीमेन वोटर काउंट है ना वो बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये फ्री बीज देना एक सही चीज़ है? आप नीचे कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि क्या हमें ऐसे पैसा फ्री में अकाउंट में देना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ एनबीएफसी इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 15 to 17% इन FY25 एज वेल एज इन FY26। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा प्रोजेक्ट किया गया? क्रिसल के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हटाया गया है। राइट, तो इसमें से नेचुरल गैस वो कमोडिटी नहीं है, बाकी सब पे जो विंडफॉल टैक्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, एसबीआई के द्वारा भी लेटेस्ट ईआरडी रिपोर्ट रिलीज की गई, जहां पे उन्होंने जीडीपी प्रोजेक्ट की गई इंडिया की कितनी, वो है 6.3% फॉर FY25। नेक्स्ट आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके द्वारा भी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिलीज की गई, जिसमें बताया गया पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा इन FY25, वहीं पे इनके द्वारा अब ये प्रोजेक्शन घट के कितना हो गया है 6.5% का। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स इंडिया का आउटलुक कितना है, या फिर इंडिया ये कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडिया कितनी जीडीपी से ग्रो करेगा? 6.8% से ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कार ग्रुप ने अभी रिसेंटली यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया में जो एजुकेशनल लैंडस्केप है उसको और बेटर किया जा सके एंड 1 लाख बच्चों को अक्रॉस 4 स्टेट्स इन इंडिया यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके। 4 स्टेट कौन सी हैं? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड झारखंड। यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ये टाइप किया है। तो BMW ग्रुप ने, जो कि म्यूनिच जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल एपेक्स चैम्बर द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई। पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही आ जाते हैं। नेक्स्ट, फिच रेटिंग्स, इन्होंने भी इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट करी। फिच के हिसाब से इंडिया 6.4% से ग्रो करेगा FY25 में। ये भी पहले 7% से प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब घटा के इन्होंने 6.4% कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया देयर पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क, जो कि एक लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर है इन डेनमार्क, फॉर अनदर 5 years टू एनहेंस IT सिस्टम्स। तो किस कंपनी ने यहाँ पे एक्सटेंड की अपनी पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क? वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एंड 5 साल के लिए ये यहाँ पे अपना पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ ताकि इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस को लाया जा सके फॉर कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स बाय ऑफरिंग लोन प्रोडक्ट्स थ्रू अमेजॉन्स एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, केयर एज रेटिंग्स, इन्होंने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया का जीडीपी, जो ये पहले 6.8 प्रोजेक्ट कर रहे थे फॉर FY25, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया है टू 6.5%। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना देखने को मिला सिंस अप्रैल 2000। ये डाटा DPIIT के द्वारा रिलीज किया गया एंड इनके हिसाब से इंडिया ने $1 ट्रिलियन का यहाँ पे अप्रॉक्स FDI देखने को मिला है इंडिया में सिंस अप्रैल 2000 से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड अलाइड सर्विसेज? वो है PB फिनटेक। नेक्स्ट आ जाते हैं, TCS लिमिटेड, जो कि एक IT सर्विस कंपनी है बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने कोलैबोरेट किया लैंडेस प्लस GYR के साथ, जो कि एक एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है बेस्ड इन छम स्विट्जरलैंड, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जा सके यूटिलिटीज़ के, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। जैसे LED बल्ब्स आप देखते हैं, राइट, ये गेम चेंजर थे अप्लाइंसेज में, क्योंकि पहले जो बल्ब आते थे वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बिल बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन वहीं पर अगर हम LED यूज़ करें तो इससे बिल भी बहुत कम हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है ये। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद TCS टू मॉडर्नाइज द बैंक्स डिजिटल कोर फॉर एनहेंस्ड कस्टमर सर्विसेज? तो किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनर किया है TCS के साथ? तो वो है बैंक ऑफ भूटान ने। नेक्स्ट, इन दिसंबर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा सेकंड सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY25। कितने का बजट था? 17,865 करोड़ रुपीस का ये बजट रहेगा, 17,865।
नेक्स्ट आ जाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इनके API को इंटीग्रेट किया जा सके किसके साथ, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ। ये एक क्रूशियल एडवांसमेंट रहेगी जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इन्होंने अपनी FY26 की मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा इन FY26। Next is our homework section, student. First, PM Modi recently released the which installment of PM Kisan scheme and where did he launched it? Second question, where was or which state will be hosting the Miss World pageant and when it will be hosted? It will be hosted in India. You have to tell me the state. Then third question is, tell me recently which edition of Khajuraho Dance Festival was held and the location where was this held. Fourth question, Udan Yatri Cafe was recently inaugurated by whom and at which airport it was inaugurated. Fifth question, Majorana 1. This is the new quantum chip developed by which company, and tell me the name of the company or chip developed by Google, the quantum chip also. Tell me that also. Then one more question, sixth question, a hotline was launched for enhancing the communication between India and which country. So these are your 6 homework questions, students, and I want to see maximum participation from all the students watching this video.